हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम्बीज लीगल बी। कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे कैंपेन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस्टॉपल। एस्टॉपल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी ग्रोइंग टॉपिक फ्रॉम लॉ ऑफ एविडेंस एंड ऑल्सो नाउ इट हैज़ बीन कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। लेट अस सी हाउ। बट पहले हम लोग ये समझेंगे कि एस्टॉपल का कंसेप्ट क्या है और कहाँ से आया है. So do watch the video till the end and get all your conceptual clarity relating to estoppel. Welcome to iExamB. Don't forget to subscribe to our YouTube channels and stay updated with all such kind of beneficial videos and recent updates, strategic preparation tips that we keep on providing you at iExamB. And if you want to ask any queries, you can write to us at hello@iexamb.com. आप इस नंबर पे कॉल करके भी आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें डायरेक्टली लिख सकते हो. And also visit our website www.iexamb.com for more updates relating to courses for preparation that are provided at iExamB. If we talk about estoppel, estoppel, as I told you, is a growing field in law. And now not only Evidence Act, it is not only exhaustively covered in Evidence Act but is also reaching contracts. Promissory estoppel का नाम आपने सुना होगा. Yes, that is also a developing field in this estoppel. पहले promissory estoppel को recognize नहीं किया गया था, but now it is also being legally recognized. But इससे पहले ये समझते हैं कि estoppel का actual meaning क्या है. First, let us see the literal meaning. Estoppel, this is a word that is old French word estopper, which means a stopper plug. उससे ये word derive किया गया है. स्टॉपर प्लग का काम क्या होता है? सिमिलरली एस्टॉपल का भी वही काम है, टू स्टॉप समबडी, एंड इट इज रेफरिंग टू प्लेसिंग अ ब्रेक ऑन द इम्बैलेंस ऑफ अ सिचुएशन. एट सम टाइम्स यू नीड टू स्टॉप समवन so that the equilibrium or the balance of that situation is maintained. For that reason आपको कुछ चीज़ों को stop करना पड़ता है. So legally if we look at this point, estoppel is the remedy. Estoppel stops somebody from contradicting himself. This is what is the legal principle. Estoppel is a legal principle that prevents someone from arguing something or asserting a right. It can be an argument, it can be an assertion of a right. It prevents someone from doing that if at all they are contradicting themselves. If that contradicts what they previously said or agreed to by law. If they are contradicting, self-contradiction अगर कहीं आ जाता है, that means no contradiction is permitted by law. Obviously, अगर आपने कोई बात कही and उसके ही बाद आप उस चीज़ से मुकर जाते हो या फिर आप उससे कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ और बात कहते हो, then legally this principle recognizes that this is affecting the rights and interests of other persons. So for protecting that, the principle of estoppel has been developed and is very useful in the field of contracts and also as an evidence it can be taken up. Doctrine of estoppel, first it was laid down in the case of Pickers versus Sears. Pickers versus Sears के केस में जो फैक्ट्स थे उसके हिसाब से ये डॉक्ट्रिन उसमें इवॉल्व हुआ है. उसके फैक्ट्स भी हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में. बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये एस्टॉपल का जो डॉक्ट्रिन है पिकर्स वर्सेस सर्स के केस से आया है. एंड आफ्टर दिस केस ओनली दिस वॉज इंक्लूडेड. एविडेंस एक्ट तब बना भी नहीं था. At that time this case was decided, and after this section 115 of Indian Evidence Act was incorporated for estoppel, and in that an illustration involves the facts of this particular case. So you can check section 115 illustration as well for that purpose.
What is the main objective of estoppel? That the other person must have acted on the faith of declaration or whatever imposition that person has made, and basing on that faith he has altered his position. He is altered in his position or else acted to his own detriment. मतलब आपने किसी पर भरोसा कर कर कुछ एक्ट अगर किया है तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा. दिस इज व्हाट इज द मेन नेसेसरी, आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर एस्टॉपल. अब इसके फैक्ट्स को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं. पिकर्स वर्सेस सर्स के. देयर वाज अ पर्सन ए को बी मिला. दे हैड अ गुड टॉक एंड बी ने क्या किया, ए से एक ज़मीन के बारे में जिक्र किया. ए सेज दैट लैंड बिलोंग्स टू हिम. बट अगर रियलिटी देखें तो ये लैंड बी की नहीं है, बट बी फॉल्सली imposes or declares in front of A that this land belongs to me. B induces him to take my land. B says that this is my land, you can purchase it. A agrees to purchase that land and also basing on that he sells his previous land. उसकी वजह से वो एक ऐसा एक्ट करता है जिससे वो अपनी सिचुएशन डिस्पोजिशन करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है. हाउ ही चेंजेस हिज पोजीशन? ही सेल्स हिज प्रीवियस लैंड so that he gets money and he finds this land to be more beneficial for him and he arranges for amount of consideration or money to pay to B and purchase that land. But what is the reality? Reality is that B does not possess that land at all. But later on what happens? B actually becomes the owner of that land. But at that time he wishes to change his decision of selling that land to A. Actually it was not a decision, it was a declaration because तब वो land B की थी ही नहीं. So B जब ये land उसके हो जाती है रियल में, वो ओनर बन जाता है, at that time B says that I won't be able to sell this land to you. But then what happens? Estoppel. Law says that stop. You have made a statement, basing on that, relying on that, A has acted, he has believing on you, he has sold his land and he has carried out his disposition. So अब आपको यहीं पे stop होना होगा. You cannot contradict yourself and you have to carry out whatever promise you have made to A. This is what is the concept of estoppel. Section 115 देखते हैं. When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted, intentionally, okay, another to believe thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative, okay, this is a very wide scope, shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. What is the rationale behind estoppel? It is prevent injustice that is due to fraud or inconsistency. ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे और फिर बाद में पलट जाएंगे. That will be a fraud on other people and will affect the rights of other people and cause injustice. Which are the different kinds of estoppel? Let us see that. Estoppel by conduct. You can also make a sign or a declaration, that is also covered under the estoppel by conduct. Estoppel by deed. अगर आप कोई deed बनाते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए डीड बनाते हो, कन्वेंस डीड, दैट इज कवर्ड अंडर एस्टॉपल बाय डीड. एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड. एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड कैन बी, फॉर एग्जांपल, अगर किसी कोर्ट का एविडेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, वहाँ पर आपने कोई स्टेटमेंट दिया था कोर्ट के सामने, वो रिकॉर्ड पर आ गया है, तो वही स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट एस्टॉपल यूज़ किया जा सकता है दूसरे केस में, बिकॉज इट इज़ ऑन रिकॉर्ड. Equitable estoppel. Equitable estoppel is a category that is involving all the other estoppels that are not exclusively covered in Evidence Act or anywhere. That is going to come under equitable estoppel. Actually ये जो estoppel का remedy है, that is an equity, that is a doctrine out of equity that has developed. So equitable estoppel की category बनाई गई है, that is going to cover whatever is there miscellaneous. And lastly, promissory estoppel. Promissory estoppel पहले इंडिया में recognize नहीं किया गया था. What was said that it should not be a future promise,
एस्टॉपल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एन एक्ट विच इज़ अ फ्यूचर प्रॉमिस. बट अब स्कोप काफ़ी बढ़ चुका है. कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ये रिलेट कर सकते हो ज़्यादा कि प्रॉमिसरी एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन डेवलप हुआ है. अगर आप कोई प्रॉमिस करते हो तो आप आपके प्रॉमिस से भी एस्टॉप हो सकते हो. दिस इज व्हाट इज द डेवलप्ड लॉ. अर्लियर इट वाज नॉट देयर बट नाउ इट इज रिकॉग्नाइज्ड. दैट इज द नेक्स्ट काइंड इज प्रॉमिसरी एस्टॉपल. So this was all about estoppel. In a very concise manner, I tried to clear your concept. अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के रीच आउट कर सकते हैं. Don't forget to subscribe, stay tuned with all such kind of videos, conceptual videos, and prepare 50% faster with iExamB. Thank you so much.